फ्रेंड्स, मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, that how coals are burnt and how steam can produced, how turbines are running from the steam, and how generators start for producing electricity. So thermal power plant converts the energy stored in fossil fuels like coal, oil or natural gas, or fissile fuels, uranium, thorium, in shaft work, and ultimately into power output or electricity. Energy released by the burning of fuel is supplied to water in boiler, and steam is generated at high pressure and temperature, which expands in turbine to low pressure and condensed to water using cooling water in condenser. The water condensate is then fed back to the boiler by the pump. So this thermal power plant works on the Rankine cycle, which is operating fluid continuously evaporated and condensed, which works on the four components: boiler, turbine, condenser, and pump. And in a steam power plant, we can use coal as a fuel or a gas. To produce 100 megawatt power, it requires 1200 ton of coal in coal handling plant. Now we discuss on the flowchart on coal-based thermal power plant. So if the coal mines are in the range of 10 kilometer, we use ropeway, and if more than 10 kilometer, we use truck, train, ships or any other vehicles for unloading the coals in coal yards. कभी कभी कोल की शॉर्टेज होती है हमारी, और सो ड्यू टू दिस plants are shut down. So for continuous operation, coals are stored for 80 to 90 days. एंड कोल को आउटडोर स्टोरेज से कोल हैंडलिंग प्लांट में लाते हैं, एंड देन लार्ज साइज के कोल को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए क्रशर से पास कराते हैं. नेक्स्ट वन इज बाउल मिल. बाउल मिल में क्रशर से स्मॉल साइज के कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड कन्वर्ट होने के बाद कभी कभी कोल पाउडर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, सो इसके लिए एयर प्रीहीटर यूज करते हैं जो एयर को हीट करती है, और इसी हीटेड एयर को प्राइमरी एयर फोर्स सक करके बाउल मिल में सेंड करता है, जिससे मॉइस्चर कंटेंट ना हो, और साथ ही साथ कोल पाउडर को बाउल मिल से बॉयलर में उड़ाकर ले जाता है. Now we are talking about boiler. The boiler is a closed vessel in which steam is produced from water by the combustion of fuel at constant pressure, which is about 250 kg per centimeter square and temperature 540 degrees Celsius. And on the outside boiler, FD fan is required because of forcefully air thrown in the boiler for 100% combustion of fuel. Next one is superheater. That is a type of heat exchanger in which heat is transferred to the saturated steam to increase its temperature. Due to this, it raises the overall cycle efficiency and also increases the turbine internal efficiency. बिकॉज बॉयलर में जो फ्यूल के कम्बसन से स्टीम बनती है वो एक वेट स्टीम के फॉर्म में होती है. सो वेट स्टीम से ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करने के लिए सुपर हीटर यूज करते हैं. एंड आफ्टर सुपर हीटर, बाय द यूज ऑफ नोजल, स्टीम स्ट्राइक्स ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स बिकॉज नोजल जनरली regulates the steam flow and guides the steam to flow at appropriate velocity. अब जैसा आप फ्लो चार्ट में हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन और जनरेटर देख रहे हैं, that are linked with the same axis of shaft and generators are coupled to the same shaft. Due to this, when steam from nozzle strike on the blades of rotors or runners on turbine, then rotor rotates, and by this shaft also rotates, and further rotor in the generator also running, which speed is about 3000 rpm, and it is maintained by the exciter. So when electricity is produced, then it is sent into transformer yard, and when the load is more and more, then it is divided in some area for the distribution of electricity, that is said to be grid. And one more thing, when steam goes to high pressure turbine, then it is transformed from thermal or potential energy of steam into kinetic energy, and after such that converted into mechanical energy of rotation of turbine shaft. Due to this, volume increases and temperature and pressure
are more and more in comparison to intermediate pressure turbine and low pressure turbine. And the equipment reheater is applied after high pressure turbine because steam which is coming from the high pressure turbine reheated in reheater and enters in low pressure turbine for the further expansion, and it is similar to superheater. Now steam from the low pressure turbine goes to condenser for exhaust, and vacuum pump are always in condenser because when steam in maximum volume suddenly converts into water, then it creates vacuum, and many times non-condensable air and other gases are having. Due to this problem created in vacuum, and pressure generates unnecessary in turbine. That's why by the use of vacuum pump in the condenser, vacuum should be created. After condenser, cooling tower is having, which is in a hyperbolite shape as shown in figure. Because of natural air automatically goes upwards, and when goes upwards, then hot water spray from the nozzles which comes from the condenser, and this spray water falls on the heat exchange surface. And 100% water not recycled, it vaporized many times from the cooling tower, so it is for top of water from the river. And river में raw water होता है जिसे प्री ट्रीटमेंट करते हैं, एंड आफ्टर प्री ट्रीटमेंट वाटर में मिनरल्स जो लेफ्ट है उसे डीएम प्लांट में सेंड करते हैं. ड्यू टू दिस मिनरल्स सेपरेटेड from the pre-treatment water, and then it's sent back to the condenser by the use of circulating water pump. And then condenser से condensate extraction pump के through demineralized water जो है लो प्रेशर फीड वाटर हीटर और हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में जाता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है. एंड द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज deaerator, which are always placed on height because of its function and feed. It removes dissolve oxygen and carbon dioxide from the demineralized water. The water from the deaerator is supplied it to the boiler through the economizer, which is located at height. Now one more thing, जब बॉयलर से फ्लू गैस आती है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में फ्लू गैस से एस पार्टिकल्स डस्ट और स्मोक को सेपरेट करती है, एंड आफ्टर सेपरेशन प्योर फ्यूल गैस आईडी फैन के थ्रू सक करके चिमनी से एटमॉस्फेयर में भेजती है, एंड रिमेनिंग जो एस पार्टिकल्स डस्ट और स्मोक है उसे एस हैंडलिंग प्लांट में सेंड करते हैं. आफ्टर सच दैट these all as particles are used for cement in cement plant. तो यही था आज का हमारा टॉपिक, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट. आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ आया होगा. अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.